Hello students, welcome back. Today we will see question number 6 of exercise number 2.1, that is insurance and annuity wale questions. So let's see question number 6. A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. So 0.625% is the rate of premium and cover 80% of its value. So 80% is a policy value of a property value. The premium paid was rupees 5,250, that is premium amount. If the price of rice is rupees 21 per kg, it means they have given a kg का price 21 rupees है. Find the quantity of rice in kg in the cargo. So we need to find over here total quantity of a rice. So let's see. Let the quantity of rice be x. So we can find out property value. Property value, that is 21 rupees of x. Then policy value. Policy value they have given, that is 80% of its value. So it means 80%. So 80 upon 100 into property value, that is 21x. Here 0 0 cancel. 2 4s are 8, 2 5s are 10. So 21 4s are 84 and here 5. Okay. So policy value is 84x upon 5. Here they have given rate of premium. So rate of premium is 0.625% and the amount of premium is 5,250. Therefore, premium is equal to rate of premium. We have formula rate of premium into policy value. So premium they have given 5,250. Rate of premium is 0.625%, means 625 upon 100 into policy value. Policy value is 84x upon 5. 5250 is equal to 5 into 100, that is 500. 84 into 0.625, here डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. 5250 into 500 is equal to 0.625 into 84x. So x is equal to 5250 into 500 upon 0.625 into 84. After calculation, you will get 50,000. So x is equal to 50,000. X is what? Quantity of a rice. So hence, quantity of rice is equal to 50,000. So students, you can note down. So students, let's see question number 7. 60,000 article costing rupees 200 per dozen. So यहाँ पे number of article they have given. Number of article. Number of article is 60,000.
कॉस्टिंग रुपीज 200 पर डजन, इट मीन्स एक डजन का प्राइस यहाँ पे उसने 200 रुपीज दे दिया गया। वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 2,40,000, इट मीन्स इंश्योर्ड वैल्यू मीन्स पॉलिसी वैल्यू इज 2,40,000। if 20% of the article were burnt by fire means 20% जो हो गया वो पूरी तरह से जल चुका है, and remaining 7,200 article were damaged to the extent of 80% of their value, जिसमें से रिमेनिंग मेरे पास यहाँ बचा है 7,200, उसमें से भी 80% जो है वो भी क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी claimed under the policy. So number of article they have given 60,000 and property value is 60,000 into 200 upon 12. So it means 12 ones are 12, 12 fives are 60. So 5 twos are 10, that is 10 lakhs. Then policy value they have given rupees 2,40,000. देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कैलकुलेशन, सो 20% क्या हो चुका है, वो पूरी तरह से जल चुका है, मीन्स कंप्लीटली बर्न्ड बाय फायर। सो 20% आर्टिकल है बर्न्ड बाय फायर, इट मीन्स 20 upon 100 into 10 lakhs means total property value, 0 0 cancel, so it means 2 ones are 2 and 5 zeros, so 2 lakhs मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। एंड रिमेनिंग आर्टिकल that is 7,200 is equal to 7,200। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7,200 को अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे। सो 12 ones are 12, 12 6 are 72, so the amount is 1,20,000। अब यहाँ पे उसने क्या बोला सर, 80% क्या हो चुका है, वो रिमेनिंग अमाउंट का मीन्स 1,20,000 का 80% वो भी क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। सो 80% आर्टिकल डैमेज्ड, hence 80 upon 100 into remaining article, that is 1,20,000, so 0 0 cancel, 12 8s are 96, that is rupees 96,000। okay, now here 2 lakh is loss and 96,000 is a 80%, जो वहां पे 7,200 पे 80% क्या हो चुका था, डैमेज हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लॉस फाइंड आउट करेंगे। टोटल लॉस मीन्स 2 lakhs प्लस 96,000, so total amount is 2,96,000। ओके, सो 2,96,000 यहाँ पे मुझे टोटल लॉस हुआ है। देन वी कैन फाइंड आउट क्लेम। सो क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ये अपने पास फॉर्मूला है। सो पॉलिसी वैल्यू इज 2,40,000 upon property value is 10 lakhs into total loss is 2,96,000, so 3030 cancel and remaining 30 cancel, so 240 into 296, so now अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्लेम 240 into 296
71,040। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, टोटल क्लेम मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।